So, hello everyone. This is Dr. Anjali Shrivastava, retired zoology professor from Jamshedpur Women's College, and this is my YouTube channel, Adarsh Arya. Today's topic is human endocrine system, including the endocrine glands and their related hormones with their important actions or the functions. Students, actually, we have already done two videos on endocrine systems, that is the female endocrine reproductive system, their anatomy and endocrinological part, that is the regulation of hormones, physiological role, and the same of the male reproductive system. Actually, as I've already told you, the syllabus, the topics I'm taking is as per the topics provided by the group of students or the MSc students of semester 2 who are in my contact and who have requested to do all these classes or to cover all these topics. So before going into the details or without going into the details of the topics, I am selecting the topics as they have provided priority wise. And in their priority list, the reproductive endocrinal part was in upper position. But now I have seen that they have asked for the general endocrinological parts topics also. So in this series, I'll be producing giving four videos, or I'm making four videos. First is a human endocrine system with the endocrine glands and their related hormones. Then second will be the classification of hormones. Third will be mechanism of hormone action, including the feedback mechanism. And fourth will be the hormonal disorders. So altogether, four more videos in a series I'll be giving to help you to understand the entire endocrinological parts as a major part. So let us come to the today's topic, human endocrine system. That this endocrine system, you all know, is a part of the glandular system of the body. And the glandular tissue or the glandular structures are those glands. The glands are the tissues or the epithelial tissues, or in majority of cases, the glands are mainly consisting of the epithelial tissue, epithelial cells that secrete certain chemical products, chemical things, that secretion of certain chemicals जिन टिश्यूज से बॉडी में जिन स्ट्रक्चर्स बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स कुछ सिक्रीट करने का काम करते हैं, certain biochemical products which secrete, they are the glandular structure or glands. These glands as a whole, very quickly just have a look. These glands may be of two types in the entire body system, human body: exocrine and endocrine. The exocrine glands, the secretion of these exocrine glands are called as enzymes. In majority of these secretions, these chemical products, mainly majority are proteins. However, the calcium and lipids are also, or phospholipids are also the major part of these secretions. That we will see when we will see the classification of hormones. Then we will see that their chemical nature in the next video. Now these exocrine glands, they are the glands which are having such type of structure. That is, this is the lumen of the gland. That may be unicellular, that may be multicellular. इस तरह का एक gland एक cell का बना हो सकता है, ये इस तरह से कई एक cells का बना हुआ होता है. This is the lumen. For the secretion of enzymes, here the enzymes produced are stored, and this is the duct of this gland, these exocrine glands, from where these enzymes are, they reach the substrate or the surface where they have to act. For example, gastric glands में पेप्सिन का secretion होता है. पेप्सिन एक enzyme है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बनता है,
और थ्रू दैट इट रीचेज द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक, और वहां पर प्रोटीन जो फूड आता है उस प्रोटीन पे काम करके उसको ब्रेक करता है अमाइनो एसिड्स में. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. these exocrine glands are numerous in our body. ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और हर काम के लिए एक अलग तरह का एंजाइम सिक्रीट करते हैं. सो thousands of types of enzymes are secreted, and they are acting on substrates, those are the exocrine glands. Now the another type are the endocrine glands, which are very important glands in the sense that they are in size they are small, usually size में small हैं, और इनका प्रोडक्शन भी बहुत कम है in comparison to the exocrine glands. Their production, the chemical they secrete is in very controlled amount, very less amount, and it is called as hormones. And these hormones, these glands are actually the ductless glands. They don't have any gland. They directly, these hormones are put into the bloodstream. So another feature, it is very evident that these glands must have sufficient blood supply. They are very highly vascularized cells with highly blood supply. Blood vessels इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, and through these blood supply, through these bloodstream, the hormone is put into the bloodstream, and naturally that they are in very controlled amount. They reach the target, which is usually, this is not the different. We have seen exocrine glands के जो enzymes हैं वो एक substrate पे काम करते हैं, जबकि यहाँ endocrine glands के target होते हैं usually the tissues and cells. That is, they are minutely, their function is more minute. One thing. Another important thing is that these hormones, endocrine hormones, or the secretions of the endocrine glands, they are the hormones, they work in coordination of the neural secretions. They are coordinated with the neurosecretions. Nervous system के direct control में होते हैं और nervous system के साथ मिल करके काम करते हैं. And that is why it is said that the endocrine glands plus the neural secretions or the neural portions, they together act for the coordination of all the systems of the body. पूरी body के जितने भी systems हैं सब के बीच में एक regulation करना, coordination करना, that is your nervous system का प्रायर काम है, that coordination is brought about with the help of the hormones secreted by the endocrine glands, and together they maintain the homeostasis. That is a constant internal body environment. Body के अंदर constant internal environment होना चाहिए, हर चीज का एक proportion होना चाहिए, करेक्ट प्रोपोर्शन पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए. पूरी बॉडी में लाइफ है, लाइफ की रनिंग का मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर द कैटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज आर ब्रॉट अबाउट by the hormone, brought about in functional mostly by a number of enzymes, but their coordination, वो enzymes कब secrete होंगे, कैसे secrete होंगे, कौन कौन सा function body के कौन कौन से part करेंगे, कैसे उनका nervous control होगा, brain से उनको कैसे control किया जाएगा, these all works are done by the endocrine glands and their hormones. So hormones work in largely as messengers. We can say the hormones are the messengers which receive the messages of the brain to the target organs to function, to make them function,
वहां अगर कुछ सिक्रीशन होना है तो सिक्रीशन करें, न्यूक्लियस को एक्टिवेट करना है तो न्यूक्लियस को एक्टिवेट करें, जीन्स को एक्टिवेट करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करना है, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट करना है, कुछ और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है। ये सारा काम एज ए होल वी कैन से hormones control metabolism, homeostasis, growth and development, sexual function, reproduction, sleep wake cycle, mood, and everything related to our body. बॉडी की से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबको हार्मोन न्यूरल सिक्रीशंस या नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर कंट्रोल करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। एंड फॉर दैट पर्पस देयर आर अ लॉट ऑफ not we won't say a lot, बहुत restricted number of endocrine glands हैं, जबकि I've told you exocrine glands unrestricted number में। पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे exocrine glands हैं जो टुगेदर काम करते हैं और बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे कैन बी, अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, मेरा वर्क स्टाइल वही है, मैं कंट्रोल करके मैं कंट्रोल में बता देती हूँ एक दो स्लाइड्स में the main points I am telling, and then about every gland, their secretions in details you can get from my this PowerPoint presentation। जब तक मैं बना सक रही हूँ मैं PowerPoint presentations आपको नोट्स के लिए साथ साथ देती जा रही हूँ, और MSc के लेवल पे बहुत शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकता है, so it is taking, but पूरा details that will be, take a lot of time. So let us come to the endocrine glands, major endocrine glands and their location। अगर हम major endocrine glands body का बात करें तो that will begin with the so here let us see the major endocrine glands and the number of hormones they secrete. I am giving you here in short, and all the names I have given in these slides एक बार हम just बता देते हैं, उसके बाद हम slides में देख लेंगे different glands, their secretions and their actions। The major endocrine glands first starts with the hypothalamus। Hypothalamus is the part of the brain, or you can say it is the floor of the, it is situated at the floor of brain। हम लोग endocrinology के दो वीडियोस देख चुके हैं जहाँ पे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट हुआ था, कहाँ, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के सिक्रीशन के समय और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के सिक्रीशन के समय। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, चाहे उसको स्टिमुलेट करना हो हार्मोन्स का प्रोडक्शन, चाहे उसको इनहिबिट करना हो, रोकना हो। So on the basis of that hypothalamus, you can see here, this is the region of hypothalamus, this is hypothalamus। From in this region then so पहले हम एक बार सारे endocrine glands का नाम देख लें, फिर इनके हार्मोन्स हम देखेंगे। This is situated at the floor of the brain, और जस्ट इसके नीचे सिचुएटेड होता है pineal body, that is also called as the third eye। in commonly it is called as common name, या इसको third eye भी की तरह भी कहते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना शीशे का तीसरा आंख जहाँ पे सिचुएटेड होता है, दिस इज द रीजन। ब्रेन के ठीक नीचे दोनों फोरहेड के दोनों टेम्पोरल के बीच में सिचुएटेड होता है, एंड इट कंट्रोल्स द स्लीप पैटर्न। पूरा बॉडी स्लीप से रिलेटेड है, आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। इफ यू आर प्रॉपरली स्लीपिंग देन यू आर सेड टू बी, आप कंसिडर किए जा सकते हैं कि यू आर फिट एंड फाइन। So that is controlled by the pineal body। Then comes the pituitary gland। We have already seen this pituitary gland, it is also situated in very closely related with the, this is the brain hypothalamic region, here is the pineal body, and then very closely related to pineal body is the pituitary gland consisting of two lobes, and this is again at the floor of the encephalon। ब्रेन का encephalon, the cavity into which the hypothalamus is situated is called as
डायोसील, एंड जहां पे वो डायोसील एंड करता है वहां पे पीनियल बॉडी है, एंड ऑन द अनदर हैंड इट इज द एंटी द पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज इन साइज, दिस इज द माइन्यूटेस्ट, सबसे छोटा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. साइज में, मॉर्फोलॉजी में this pituitary gland is minutest, but this is called as the master gland. और एक चीज यहाँ पे होगा, hypothalamus is the master of master gland. Hypothalamus master gland को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको master of master gland कहते हैं. And pituitary is the master gland as it controls the entire endocrine system of the body. सारे इंडोक्राइन सिस्टम को, इवन हाइपोथैलेमस को भी इंटर्न वी विल सी. हम लोगों ने पहले भी देखा था इंडोक्राइन मेल एंड फीमेल सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे कि जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है उसको पिट्यूटरी से रिलीज जो हार्मोन्स हैं एफएसएच एंड टीएच, सॉरी एलएच, एफएसएच एंड एलएच, इन्हीं का कंट्रोल, इन्हीं का प्रोडक्शन, इन्हीं का अमाउंट production of gonadotropin hormone को control कर रहा था. So this is the master gland. This is the pituitary gland formed of two parts. The anterior part is called as adenohypophysis. This is again formed of two parts, pars distalis and pars intermedia, an intermediate part between the anterior pituitary and posterior pituitary. And the second part, the posterior pituitary, is called as neurohypophysis. हिस्टोलॉजी हम नहीं देख रहे हैं. आप जब हिस्टोलॉजिकल पार्ट या डिटेल्स आपको जब पढ़ना हो, हम एंडोक्राइनोलॉजिकल पार्ट हमको देखना है, हार्मोनल सिक्रीशन देखना है, तो हम बहुत शॉर्ट में जा रहे हैं. दिस पास डिस्टालिस सीक्रेट्स ऑलमोस्ट 6 hormones. Pars intermedia secretes 1 hormone. Pars it secretes 1 hormone, that is the melanin secreting hormone MSH, and neurohypophysis secretes 2 hormones. So altogether 9 hormones are secreted by the pituitary gland, controlling the entire endocrine system of the body. So this is the pituitary gland. Then comes the thyroid gland, that secretes 3 hormones. Just behind the thyroid gland is the parathyroid gland, that is called as butterfly gland. The thyroid gland का shape होता है, it is a bilobe gland joint with portion. These are the lobes of thyroid gland, and this in between structure is isthmus. So this is the thyroid gland. और इसको अगर आप निकालेंगे, अगर हम सीधा इस तरह से देख रहे हैं, तो अगर आप थायराइड ग्लैंड को निकाला जाए तो जस्ट इसके पीछे इस तरह से 4 लोब के बने हुए पैराथायराइड ग्लैंड होता है. दिस पैराथायराइड ग्लैंड secretes a single hormone, that is the PTH, parathyroid hormone, that controls, we will see parathyroid hormone and the parathyroid hormone secretes the parathyroid hormone that regulates calcium level. The functions I have already given in very details into the slides, so we will see very shortly, so that आपका video interesting बना रहे और short में खत्म हो जाए. Parathyroid gland, then comes the thyroid, parathyroid, then comes the thymus gland. Here it is already visible, all these glands. This is the parathyroid and parathyroid. Thyroid को हटाइएगा तो parathyroid दिखेगा. Then this is the thymus gland. Thymus gland is just below, size में काफी बड़ा होता है, but इसका function काफी controlled होता है, and but बहुत important होता है. It secretes thymopoietin and tyrosine hormone that controls the T cells or the immune system. It controls the immune system, T cell producing or lymphatic producing cells, जिनको कहते हैं lymphatic cells, controlling the immune system
of the body by producing T cells. This thymus, the hormones, it secretes two hormones that controls the calcium level and that controls the RBC level. And RBC का level control करता है और T cell का production control करता है. Calcium level is controlled by parathyroid. Then comes the adrenals. Adrenals are the largest glands, paired glands situated just above the kidneys. These are the adrenals. This is the kidney, this is the adrenal. So these are the largest glands in size, formed of histological layer formed of cortex and medulla. The external part is the cortex and the internal or the central part is medulla. And both of these secrete different hormones altogether. Adrenal secretes 7 hormones. So after pituitary, adrenal is another very important gland that controls almost all the other parts of the body. Again, however, ज़्यादा important secretions pituitary के होते हैं, उनको assist करता है. जैसे अगर आपको याद हो तो हमने मेल फीमेल reproductive system जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था androgen and testosterone as well as estrogen are their productions are also to some extent brought about with by these adrenal glands. The adrenal glands में cortex on secrete करते हैं almost 5 hormones categorized into 2 groups. Together they are called as cortisols, categorized into mineralocorticoids and glucocorticoids. Mineralocorticoids and glucocorticoids. दो group में on the basis of their chemical composition, they are of they can be divided into 2 groups: mineralocorticoids, mainly containing the minerals, and the glucocorticoids, mainly containing the glycos the glucose related molecules. And medulla secretes 2 hormones, norepinephrine, adrenaline and non-adrenaline. Adrenaline and noradrenaline. This is also called, this is, there is norepinephrine term is also there. Adrenaline, norepinephrine and noradrenaline, also called as norepinephrine. So this is the adrenals. Then is the very important gland that is also very large. अगर आप true sense में morphologically कहिए तो ये सबसे बड़ा gland है, which is exo as well as endocrine gland, that is the pancreas. It also secretes 2 hormones, glucagon and insulin. And then last but not the least are the gonads. That is the testis in male and ovaries in females. तो testis और ovary के बारे में क्या-क्या secretions, क्या-क्या hormone बनाते हैं, क्या इनका structure है, we have seen in very much details when we were doing the reproductive system. Now, so this is the major endocrine glands. Here you can see this is hypothalamus, this is the pineal gland, pituitary gland, thyroid and parathyroid, thymus gland, pancreas, adrenal, then testis in male and ovary in female. And this is in short the hormones secreted by the these endocrine glands. The hypothalamus secretes TRH, CRH, GHRH. Actually, अब अगर हम देखें short, I am now again giving you the number of hormones we have already seen. These some hormones so not going into much details in writing into the slides, we are now looking into the details here with the, और हम slides नहीं add करते हैं because all the details I have given. So start with these are the endocrine glands, and now let us see their hormones. The hormones secreted by them. Start with the hypothalamus. Hypothalamus altogether secretes 11 hormones. But make mind it, ये जो 11 hormones हैं, इन 11 hormones का नाम मैंने I have already mentioned here. These glands we have seen,
their secretions in general, in very short, these are the functions done by the hormones, and these are in very short given the names of the hormones secreted by hypothalamus: secreted TRH, CRH, GHRH, dopamine, somatostatin, vasopressin. These are the hormones जिनको हम all together hypothalamus 11 hormones secrete करता है. 11 hormones में 8 hormones होते हैं the releasing hormones. some particular hormone को release करने का ये काम करते हैं through the different endocrine glands, and 3 are the out of here the 8 hormones are the releasing hormones. अगर हम इसको majority में 2 major group में बांटें तो 8 hormones are releasing hormones and 3 hormones are inhibiting hormones. ये क्लासिफिकेशन हम लोग जब देखेंगे तब ये टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे. हालांकि रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स का स्ट्रक्चर अलग से कुछ नहीं देखना, बट स्टिल वी विल सी इन शॉर्ट. सो दीज आर द 8 ये जो 8 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 9 हार्मोन्स आर देयर इन secreted by the pituitary hormones, then adrenal hormones 7 है. तो इन जितने भी हार्मोन्स हैं जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, उन सारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का मैसेज आता है थ्रू द ब्रेन और थ्रू द हाइपोथैलेमस थ्रू दीज रिलीजिंग हार्मोन्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, हमने देखा था GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH. तो ये GnRH हाइपोथैलेमस से आ रहा है. इफ यू रिमेंबर, ये पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे. एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाड्स पे जाता है और वहां पर सिक्रीट करता है. एंटीरियर पिट्यूटरी 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, LH एंड FSH, और इस तरह से गोनाड्स को स्टिमुलेट करता है. तो ये GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है. गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन इनहिबिट को के रिलीज को इनहिबिट करने के लिए, इफ यू रिमेंबर, वी हैव सीन प्रोजेस्टेरॉन. अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो GnRH को कम बंद करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन. तो इस तरह से हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ही कंट्रोल अमाउंट में होना चाहिए. जो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिक्रीशन देखेंगे तब हम देखेंगे कि हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत रेगुलेटेड अमाउंट में होना चाहिए, और जितने अमाउंट में वो रिक्वायर्ड है उतना सिक्रीट होने के बाद इमीडिएटली उसको बंद भी होना होता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन, हार्मोन्स को कब सिक्रीट होना है, कब बंद हो जाना है, on the basis of their functional mode, the hormones may be of 3 types. Autocrine, अपने आप सिक्रीट होते हैं और खुद ही उनका एक स्मॉल फ्रैक्शन, अगर वो जरूरत भर सिक्रीशन हो गया तो खुद ही उनको अपने को स्टॉप करना होता है. दैट इज ऑटो, दे themselves control. Then paracrine, that is they act on the neighbor cells, जहाँ ये सिक्रीट होते हैं, जहाँ पर ये बने हाइपोथैलेमस में. सपोज एग्जांपल के लिए, तो हाइपोथैलेमस से बिल्कुल बगल में यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन मीडियम की कोई जरूरत नहीं है. नो ब्लड medium is required. And third type are the typical endocrine secretions, endocrinal hormones that pass through the bloodstream and act as the messenger to stimulate the hormones. So this is the function. And now, so this is the, so in short, हम यहाँ पे देख रहे थे hypothalamus के hormones हम देख लेते हैं. Their names I have given in the slides, that we will see one by one. Then are the pineal gland that secretes the melatonin secreting hormone, MSH, that controls the sleep mode, sleeping pattern of the body. Then are the pituitary gland, इनके दो part होते हैं, rather 3 part होते हैं. Anterior pituitary, posterior pituitary और pars intermedia, and दोनों pituitary को join करता है. But it is largely it is said to be the pars distalis and pars intermedia are the 2 parts of the anterior pituitary. Altogether, 9 hormones are secreted by the this pituitary gland. 11 hormones are secreted, 8 plus 3, 8 releasing, 3 inhibiting hormones. Then thyroid hormone secretes 3 hormones, T3, T4, and calcitonin.
parathyroid secretes one hormone, PTH. Liver, so अभी हमने देखा था large endocrine glands. That there I have just forgot to mention you that there are certain tissues in the body, certain tissues and the cellular parts that also act as the endocrinal part, जिसमें mainly include होता है liver, gastrointestinal tract, kidneys, then certain probiotic microbial area of the human body, जहाँ पे जो microbial volume body का बनाते हैं, and they also together act as an endocrinal zone secreting a number of hormones. So these are mentioned here. जिसमें एक liver है, liver secretes these two hormones. Then adrenal controls the glucocorticoids, adrenaline, noradrenaline, androgens, and mineralocorticoids. Here it is one more group will be mineralocorticoids. Together glucocorticoid and mineralocorticoid को एक साथ कहते हैं cortisols. Then is the stomach, again gastrointestinal tract. It is some of the cells of the stomach, they act as the endocrinal part, secreting gastrin, ghrelin, histamine, somatostatin, and neuropeptide Y. These are certain particular hormones. इन सब के बारे में स्लाइड्स में लिखा हुआ है, not much details, but जितना आपको जरूरत है नोट के लिए वो उसमें दिया हुआ है. Then is the pancreas, that is the exo as well as endocrine gland. इसमें pancreas का जो enzyme secretion होता है वो intestine में पहुंचता है और assimilation के पहले final digestion complete करता है, controlling the carbohydrate secretion, then carbohydrate digestion, then lipases, fat and fatty acid and glycerine का digestion में help करता है, वो exocrine part करता है. और endocrine part are the interstitial cells or the islets of Langerhans that secrete the insulin, glucagon, and somatostatin. These three hormones are secreted by the pancreas. Insulin is causing the release of certain इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है. ग्लूकागॉन जस्ट रिवर्स काम करता है. कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, दैट इज ग्लूकोजेनेसिस, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन. और ग्लूकोज को कन्वर्ट अगर वो यूज में नहीं आया तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलियोसिस, and that is done by glycogen में conversion करता है glucagon, and these two together regulate the carbohydrate level and sugar level. ना कम होने देता है, ड्रॉप होने का वजह हो सकता है ग्लूकागॉन की कमी, इंक्रीज होने की वजह होती है इंसुलिन की कमी. And somatostatin, it controls the homeostatic conditions of the body. Then is the kidney that secretes these three hormones, the renin, calcitriol, and erythropoietin, जो RBC के production में help करता है. Then ovary and placenta, they together secrete estrogen and progesterone, and testis, androgen and estradiol or epinephrine, and uterus, prolactin and relaxin. So these are the main hormones and the hormonal system or endocrinal system of the human body. Again, here is the same thing, but more details have been given here. These are the endocrinal glands, these are the hypothalamus and anterior part of the body secreting hormones. You can see these are the thyrotropin releasing hormone. इसमें और भी थोड़ा ज़्यादा details दिया हुआ है. These are the charts, flow charts you can go through. Now these facts we have already seen. Exocrine gland क्या होता है, endocrine glands क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, एक्सोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है. These all things we have already seen. The system is the endocrinal system is consisting of a series of glands and tissues producing and secreting hormones which are used by the body to regulate and coordinate vital bodily functions including growth and development, metabolism, sexual function and reproduction, sleep and more, totally maintaining the homeostasis, reproduction and
other important metabolic activities of the body. Now, apart from the major endocrine glands, the system is forms an incredibly complex consisting of specialized endocrine glands together with tissues such as fat, adipose tissue, and bone that have a secondary endocrine function and also secrete a range of hormones. So these are now the number of glands that we have seen. Again, apart from that, these well-defined endocrinal glands, these are other bodies, as I have told you. It is also suggested that the microbial biome, that is the diverse plethora of microorganisms colonizing the human body, also function as virtual endocrine organ. This is a report presented by O. Callaghan et al. In 2016. Now, the highly vascular nature of endocrine glands allows for delivery of signals. What is this signal system? कैसे hormones काम करते हैं, that we will see when we will see the mechanism of hormonal action. Cell signaling through these hormones signal the relative zones or relative areas to work and perform their own hormones are also released, and other production of other hormones are released, also stimulated or inhibited, and in this way a definite system of homeostasis and other physiological conditions or metabolism is maintained. Now, as I have told you, autocrine system hormonal function तीन तरह के basis पर hormone तीन तरह के हो सकते हैं, autocrine, paracrine and endocrine. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी एक पर्टिकुलर वो ऑटोक्राइन सिस्टम भी करता है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी में कुछ हार्मोन्स अपने प्रोडक्शन को खुद कंट्रोल करते हैं, and that is called as negative feedback mechanism. That we will see when we will see the details the mechanism of hormonal function. This is, for example, thyroid gland releases hormones that regulate metabolism, such as thyroxine is the hormone secreted by the thyroid gland. But thyroxine अगर over secrete हो जाता है तो that is called as hyperthyroidism. काफी उसमें बहुत सारे disorders create होते हैं. कम secrete होता है तो goiter बनता है. तो इसलिए exact release कितना होना चाहिए, तो उसके लिए एक majority of hormones, they themselves control their regulation by sending a negative feedback message to the brain, and that is called a negative feedback mechanism of the hormone secretion. This is enough for now. That details we will see when we will do the the mechanism of hormonal secretion. Now, these are the hormones secreted by the different, अब ये एक एक करके hormones उनके नाम दिए हुए हैं, which are the these are the hormones of the hormones secreted by the hypothalamus. Already these hormones include GHRH or STRH. This is somatic this is the growth hormone releasing hormone or somatostatin releasing hormone that controls the body growth. Then GnRH, gonadotropic releasing hormone. TSH, thyroid stimulating releasing hormone. ACTH, adrenal cortex releasing hormone. This should be ACSH. Then FSH, follicle stimulating hormone. LHRH, luteinizing hormone. Then PRH is the prolactin stimulating hormone releasing hormone. These are all releasing hormones. RH matlab releasing hormone. And inhibiting hormones include GHIH, PIH and MSIH. These are, ये देख रहे हैं आप कि ग्रोथ हार्मोन या को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो पिट्यूटरी से को स्टिमुलेट करेगा इन हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए, और कुछ हार्मोन्स आते हैं जो थैलेमस में ही, हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होते हैं और यही फिर से इनको रोकते हैं. GHRH को स्टिमुलेट करता है और जब ओवर प्रोडक्शन होने लगता है तो उसको रोकता है. Accordingly, the PIH is inhibiting the PRH hormone.
MSH inhibiting is the melanin releasing hormone. तो यही रिलीज करता है, यही कंट्रोल करता है. और बाकी के जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी से जो रिलीज होते हैं, लाइक द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इनको कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरॉन. TSH को कंट्रोल करता है वो थायरॉक्सिन इटसेल्फ पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि अब और प्रोडक्शन बंद कीजिए. तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स से पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से वो बंद करता है सिक्रेटिंग हार्मोन्स को. बट देयर आर 3 और 4 और कुछ इनहिबिन हार्मोन्स हैं जो जिनको हमने देखा है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और हार्मोन्स का फिजियोलॉजी देखते समय. कुछ इनहिबिन हार्मोन्स एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स आर secreted by the gonads also to inhibit the production of those related hormones. So this is the hypothalamus. The hypothalamus also secretes a group of hormone or a neurotransmitter which is directly working, सीधा nerves के टिप से रिलीज होता है और केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग बिटवीन नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन and rest of body, and that is dopamine is called as हैप्पी हार्मोन, जो एक फील गुड हार्मोन की तरह काम करता है और रिवॉर्ड सेंटर हार्मोन की तरह काम करता है, इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मोटिवेशन, मूड एक्सेट्रा. सो नाउ these are the hormones, the different hormones. सेकेंड हार्मोन हाइपोथैलेमस के बाद ये पिट्यूटरी हार्मोन है. पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड एडेनो हाइपोफाइसिस है. एडेनो हाइपोफाइसिस के जितने भी हार्मोन्स हैं, दैट आर द 7 हार्मोन्स एडेनो हाइपोफाइसिस के हैं. दीज आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ब्रेन से कंट्रोल होते हैं. हाइपोथैलेमस के सिक्रीशंस या रिलीजिंग हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के 7 हार्मोन्स को. दीज आर 7 हार्मोन्स, वेयर एज न्यूरो हाइपोफाइसिस controls directly. This neurohypophysis is the posterior pituitary. It secretes 2 hormones, oxytocin and posterior pituitary. That secretes 2 hormones, oxytocin and vasopressin. Oxytocin controls the birth process and the vasopressin controls the urinary secretions and all the urinary bladder, urinary urine secretion को control करता है, blood pressure को control करता है, cholesterol and other metabolic levels को control करता है. That is by the posterior pituitary. Now these are the anterior pituitary hormone, GH, prolactin or lactogenic hormone, TSH, ACTH, LH, FSH. These details I have already given you. Please go through these for the details, because it is going to take very long time अगर हम एक पर बात करें तो. Now this pituitary also secretes thyroid stimulating, thyroid control करता है, ACTH adrenal को control करता है, growth hormones growth को control करता है. So these are the hormones secreted by the pituitary glands. The details of all you can take from here. Then is the pineal body. Pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. This forebrain के back में होता है, जिसको हम third eye की तरह कहते हैं, in between. It secretes a single hormone, that is melatonin. It regulates the 24-hour diurnal rhythm of our body, that is the sleep pattern. It controls the sleep patterns and also influences metabolism, pigmentation and menstrual cycle, as well as defense capability. So this is about the pineal gland. Then comes the thyroid gland. Thyroid gland is a bilobed structure we have already seen. Thyroid gland 3 hormones secrete करता है, T4, T3, T4 and calcitonin. T3 is the triiodothyronine. This control then thyroxine. This controls the this controls the iodine production. Tetraiodothyroxine this regulates the a number of factors. बहुत सारे, goiter का production को करता है, body growth control करता है, muscular growth control करता है, बहुत सारे काम करता है thyroxine. And the third is the calcitonin. That calcitonin controls the calcium level in the body. So this is the, now you can go through the hyperthyroid
का सिक्रीशन कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, ओवर हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है, और दोनों ही कंडीशंस बहुत सारी इरेगुलरिटीज की वजह बनते हैं. When we will see the disorders or the hormonal disorders, then we will see all these disorders or the ailments due to the hormonal imbalance that we will see separate. Then, as I have told you, thyrocalcitonin or calcitonin is control is also regulated by the thyroid gland. Then is the parathyroid gland. Parathyroid gland secretes a single hormone, that is the parathyroid hormone, and this parathyroid hormone maintains the calcium level in the body. Along with the calcitonin of the thyroid gland, it works together with the calcitonin of the thyroid gland, and it maintains the calcium levels in the body, this PTH. And this PTH is controlled by PIH, that is the parathyroid inhibiting hormone, जो हमने देखा था hypothalamus में. So this is the parathyroid gland. Then comes the thymus. Thymus is a gland. If you remember, we have seen just thyroid के ठीक नीचे thymus gland है. Thymus gland secretes two types of hormones. It secretes two types of hormones. That is, the thymus secretes the thymopoietin hormone. Thymopoietin hormone that maintains the RBC, that is red blood corpuscles का level को maintain करता है. And another hormone is thymosin hormone. This is a very important hormone that maintains the production of T cells in the T cells are the type of lymphocyte cell, that is a type of WBC, that is blood में जो blood corpuscles हैं उनको maintain करने का काम करता है thymus gland. And this T cell and the lymphocytes, they together they control the body immune system. By body keep total immunity at different parts. This immune system is controlled by the thymus gland, and along with that, this thymopoietin hormone, it controls the skin wrinkling also. Age के साथ जो skin के wrinkles किसी के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किसी के कम होते हैं, that remains under control of this thymus gland. Then is the adrenal gland. Adrenal glands are the largest gland. I have already told you, हालांकि thymus का भी size काफी बड़ा ही होता है. Adrenal glands, they are situated on the two sides of the kidneys. In the very beginning, we have seen the position of the adrenal glands. These are the adrenal glands. These are adrenal glands situated, and in between is the pancreas. And this is the ovary. So we will come and test this. We won't come again here when we will do these hormones, because already it has taken a lot of time. बहुत बड़ा हो चुका already ये video. I have thought to complete in within 20 minutes, but I think it has taken a lot of time. So the adrenal gland, but still जो जरूरी points हैं वो तो हमें देखने ही होंगे. Now come to the adrenal gland. Internally अगर हम देखें तो histologically, adrenaline is again composed of two main areas. This is यहाँ पे हम इस तरह से अगर बनाए थोड़ा triangular होता है. In between is the medulla. And here are the different layers forming the adrenal cortex. This is the adrenal cortex, and this is adrenal medulla. Medullary region is comparatively connective, formed of connective tissue, loose connective tissue. And the cortical region is comprising of, अगर इसका astrological cross section देखिए तो इस तरह से columns बने हुए होते हैं. Cells are arranged in columns, and these cells are containing mainly two types. So tissues are there: cortex, adrenal cortex, and adrenal medulla. Now, adrenal medulla, as I have told you, I have mentioned you, it secretes two types of hormones, that is adrenaline and noradrenaline. And these two hormones together form a group of hormone called as catecholamines. Catecholamines is a group of hormones जो neurosecretions
एक डोपामाइन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थैलेमस से एक और सिक्रीशन होता है डोपामाइन। ये तीनों मिल करके कैटोकालामाइन का एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, एक ग्रुप में आते हैं केमिकल्स के, दैट इज कॉल्ड एज कैटोकोलामाइंस, जिसमें आता है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामाइन। These not adrenaline and noradrenaline, or norepinephrine. I was not wrong there. Epinephrine and norepinephrine. These together, they are the stress controlling hormones. Any kind of stress during emergency situations are called as emergency hormones or hormones of flight. These hormones increase alertness, pupillary dilation, आंखों का जो प्यूपिल्स है इनका डायलेशन को कंट्रोल करते हैं, देन रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग, heartbeat, strength of heart contraction, rate of respiration, all these actions are controlled by these hormones. That is, the catecholamines stimulate breakdown of glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood. So instead of reading, I think you can take the detailed function of the catecholamines breakdown. They control also stimulating the breakdown of lipids and proteins. Now the adrenal cortex secretes the group of hormones that is called as corticoids, and these corticoids are again divided into two types. Glucocorticoids, they are controlling the carbohydrate metabolism, whereas the mineralocorticoids, they regulate the balance of water and electrolytes in the body. So this is these are again the group of हॉर्मोन्स, जिसमें एल्डोस्टेरोन बहुत मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, जबकि cortisol is the main glucocorticoids. Sorry. And the group of hormones secreted by adrenal cortex is called as corticoids. So don't get confused between corticoids and cortisol. Cortisol is a type of hormone. Corticoids are the group of hormones. Then glucocorticoids stimulates the gluconeogenesis, lipolysis, and proteolysis, and inhibits cellular uptake and utilization of amino acids. That is, they work in coordination with the pancreatic glucagon and insulin. Then cortisol involved in maintaining cardiovascular system and the kidney functions. Glucocorticoids produce anti-inflammatory reactions and suppress the immune response. So these are the much elaborated system of the adrenal hormones. One important point is that one more type of hormone is secreted by the adrenal cortex, that is DHEA. This is dehydroepiandrosterone, and this hormone produced by adrenal cortex helps produce other hormones like testosterone. ये सेक्स hormones का secretion को influence करता है, और इसकी कमी से PCOS की तरह, PCOS पे पूरा वीडियो हम देख चुके हैं. PCOS को जो सब symptoms हैं, accessory hair growth, facial hair, and other characters. So it is sometimes it is said that this DHEA or dehydroepiandrosterone is related to can create overproduction of DHEA, can create the PCOS-like conditions. Then is the pancreas. Pancreas, as already I have told you, it is an exocrine as well as an endocrine gland, having islets of Langerhans, which is the endocrinal part, whereas the acini are the exocrinal part. The endocrine hormones secreted by Langerhans are A cells and P cells. Two main types of cells are present in islets of Langerhans. The A cells secrete glucagon and P cells secrete insulin. These are the two important hormones secreted by the pancreas that regulate the glucogenesis and glycogenesis. That is, glucose को glycogen में convert करना का काम होता है. Normally जो carbohydrate हम लेते हैं, carbohydrate को glucose में convert किया जाता है, glucose blood में आता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और अगर ये कन्वर्शन नहीं हो प्रॉपरली, दैट इज डन बाय द इंसुलिन, और अगर ये कन्वर्शन नहीं हो तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल दिखने लगता है. दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज mellitus, and this insulin controls the diabetes.
whereas just reverse ग्लाइकोज अगर ग्लूकोज की कमी होने लगे तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फैट लिवर में एडिपोज की तरह फैट की तरह स्टोर था वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने लगता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज लेवल सरप्राइजिंगली बढ़ने लगता है, and that function is due to the imbalance of another hormone, that is the glucagon. Now these glucagon and insulin imbalance may causes the hyperglycemia, that is overproduction of sugar in the blood, or hypoglycemia, that is the lower production of sugar in the blood. Then the testis and ovary, इसके पूरे डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं, कैसे एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन का एक मेन पार्ट होता है, एंड्रोजन कैसे वो पूरी मेल सर्कुलेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजोआ के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. देन इज द ओवरी, पेयर्ड ओवरीज, इसके बारे में भी हम काफी डिटेल्स, एफएसएच एंड एलएच ओवरी और टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और किस तरह से मेल एंड फीमेल रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय these hormones of ovary and testis that we have seen in details. If you want, you can go through the playlist to those male and female reproductive hormones and see the details. Now, the hormones of the apart from these major endocrine glands, as I have told you, we have already seen, these are certain heart, kidney, gastrointestinal tract, then a plethora of myobacterial zone of human body. These secrete certain more hormones in the body controlling the metabolism. That these are certain hormones that from the heart, this ANF is secreted, causes dilation of blood vessels. This reduces blood pressure. Then the kidney cells produce a peptide hormone called erythropoietin, which stimulates erythropoiesis, that is formation of RBC. The endocrine cells present in the part of gastrointestinal tract secrete four major type of hormones: gastrin, secretin, cholecystokinin, CCK, and gastric inhibitory peptide, GIP. And this group is also called as ghrelin. Chart में आप देखिएगा एक जगह ghrelin mention किया हुआ है. So these are this group of these hormones together can be called as GLP-1 or ghrelin. Gastrin acts on gastric glands, stimulating the secretion of HCl and pepsinogen. Protein के digestion में help करता है. Secretin acts on exocrine pancreas, stimulating secretion of water and bicarbonate atoms. So the CCK acts on both pancreas and gallbladder, stimulating secretion of pancreatic enzyme and bile juice. GIP inhibits gastric secretion and motility. Several other non-endocrine tissues secrete hormones called growth factors. Group में बहुत सारे tissues जो secrete करते हैं hormones को, उनको एक साथ रख दिया गया है. A group of hormones में together called as growth factors, which are essential for normal growth of tissues and their repairing and degeneration. Now, these endocrine systems, they derive from all three germ layers, that is their origin and at the fetal time. And efficiency decreases of endocrine glands with age. This is also a fact. जैसे जैसे age बढ़ता है, endocrine glands की efficiency घटती चली जाती है. This is the report of a survey. So with this ends the endocrine glands and their hormones. In the next class, we will see the classification of hormones. After that, we will see the mechanism of hormonal function and then the disorders. So do like, share, and subscribe my channel. If you like it, press the bell icon to get notified. And thank you. Thank you, students.